This conference will now be recorded. Okay, so right now we are on page of our Azure portal. और last अगर session की बात करें तो I think we discussed about the theoretical concept of Azure AD Join and Azure AD Connect. दो important services हैं Azure AD के topic के case में. We must need to know about the gap between AD Join and AD Connect, right? AD Join can give us option to provide the security in the sense like as a Windows 10 your operating system का अगर आप password भूल गए हैं तो उस Mhm. case में Azure AD Join can help us. Okay. Means we are able to create user from Azure portal and same Azure account के जरिए आप अपने on premises के Windows 10 को login करा सकते हैं. Not Okay. only the login, we are able to save the BitLocker key. अगर आप on Mhm. premises में कोई BitLocker कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो उस Mhm. BitLocker keys को हम आसानी से अपने Azure portal में सेव कर सकते हैं. Got it what I'm saying? Yeah. For example, we establish our n number of Windows 10. I'm not talking about the single computer in Mhm. real environment. For example, this is our Azure portal, right? Mhm. And in Azure portal, we have a multiple Windows 10 computer. ये अपने पास on premises पे Windows 10 operating system available है. These all are the on prem. लोकल विंडोज 10 हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा डेस्कटॉप हो सकता है जो विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखा है. दिस इज एज्योर पोर्टल और यू नो दैट एज्योर पोर्टल के अंदर वी आर एबल टू फाइंड एज्योर एडी. एज्योर एडी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द यूजर RBAC services and the another important parts, right? Mhm. अब हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू यूज द एज्योर एडी जॉइन. सबसे पहले हम एडी जॉइन के बारे में बात कर लेते हैं and after that we'll discuss about the Azure AD Connect. Join क्या करता है ना, join के थ्रू आप यहाँ से एक यूजर बनाएंगे. We just need to create a Azure AD user and इस Azure AD यूजर के जरिए हम ऑन प्रोमाइसेस Windows 10 को कनेक्ट कराने का काम करेंगे without using any third party tool. So the benefits to connect our Windows 10, इससे क्या हो सकता है, we are able to manage the login control. आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के Windows 10 के लॉगिन कंट्रोल कर सकते हैं. Second, save the BitLocker key. जो ऑन प्रोमाइसेस पे अगर आपने BitLocker कॉन्फ़िगर कर रखा है, so you are able to save the BitLocker keys. ऑन प्रोमाइसेस के BitLocker keys को आप आसानी से Azure के पोर्टल पर सेव किया जा सकता है. This is the actual usage. Is it okay? Mhm. Let me show you the procedure how we can do that. यहाँ पे अपने पास this one is our Windows 10 operating system, right? I'm just going to create one user on Azure portal. वैसे तो already बना रखे हैं बहुत सारे user. Azure portal पे आ गए, AD पे जाएंगे and in our Azure Active Directory we have a n number of users that we have already created. So let me try to access through class 1. ठीक है, यहाँ पे अपने पास class 1 user है. First of all, I'm just going to check. Wait. Make sure the password क्योंकि I think हमने bulk user create किया था, तो let me verify the password.
Okay, now we just reset the password because we will use same user to connect our on-premises machine. Back to the on-premises, or is on-premises पे we wanted to connect our on-premises device, on-premises Windows 10 to Azure portal. इस क्लास यूजर से क्लास 1 यूजर को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं ऑन प्रोमाइसेस से. दिस वन इज अवर Azure AD यूजर. बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, गो टू द सेटिंग. यहाँ पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे and it will redirect you on the page of administrator account. Select account option. Under the account we are able to find access work or school, and we are able to find connect option. Just need to click connect. Same Active Directory user that you created, it's a class 1 @cloudkaksa.in. class 1 @cloudkaksa.in. Next, provide the same password जो आपने अभी reset किया and sign in. Now you successfully added your Active Directory user to on-premises machine. Click done. Class 1 @cloudkaksa.in successfully joined to our on-premises Windows 10 operating system. Back to the Azure portal, select Active Directory services. Under the Active Directory services, we are able to find devices. Click here. It will give you the complete information about your device. We are able to find total number of devices to select. This is our Windows 10 operating system जो अभी आपने just join कराया है. Desktop FGMO something associated with class 1 and timing ये आपके पास information है. इतनी तारीख को आपने इसको join कराया है. Okay. Clear? You are able to find your user over a Azure Active Directory panel. You can verify the information like which user you used. यहाँ पे देखिए no BitLocker recovery keys are available. क्योंकि अभी हमने कोई भी recovery keys नहीं तैयार की. That's why we are unable to find any recovery keys. But it's verified कि आप अपने इससे class 1 के user से Windows 10 को अपने join करा दिया. Let me verify the computer name. Host name. The same computer name that you are able to find. अगर हम यहाँ पे बात करें computer name की, desktop FGMO something, desktop FGMO NDA, same computer name आपका यहाँ पे available है. Now the benefits इसमें ये है कि अगर हम ये Windows 10 मशीन के रूट यूजर को भी फॉरगेट हो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, या किसी अदर यूजर को का पासवर्ड भी हम भूल जाते हैं ना, तो वी आर एबल टू लॉग इन आवर मशीन थ्रू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. अब हम इस पर्टिकुलर एडी यूजर से अपने ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 की मशीन को आसानी से लॉग इन करा सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल मोटो. इज इट ओके? Yeah. ठीक है. Next, another important part, we should know about the you can say that usage of BitLocker key saving. So have you heard about BitLocker? Why we need to use it? To store your credentials. No, no, not credential manager. BitLocker. I think where you can store your password and is this one or? No, no, no. Password is stored by the credential manager. BitLocker is a basically, you can say that to save to protect your drive. For example, let me show you. I'm just going to create one drive because I don't want to use BitLocker for my existing drives. एक छोटी सी ड्राइव बना लेते हैं यहाँ 5 GB की.
We created one drive with name of H, drive letter H, right? Mhm. That's your system. You're working. I mean, you're doing on your system. Windows 10 on premises, yes. Okay. So open this PC, select your BitLocker key. This one is my BitLocker key. Double click, open. New folder. I'm just going to create a folder, data, and type something. Now, done. I wanted to protect it. So how to protect it? Just open BitLocker, search BitLocker manage. यहाँ पे अपने पास हर एक ड्राइव की इंफॉर्मेशन है. वी आर एबल टू फाइंड IH, हर एक ड्राइव की इंफॉर्मेशन है. सॉफ्टवेयर, यूट्यूब. आई वांटेड टू एक्टिवेट BitLocker टू H ड्राइव. सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्लिक टर्न ऑन and choose the password. So I wanted to use any basic password. Click next. We are able to find multiple option. अब देखिए यहाँ पे multiple option दिखाई पड़ रहा है. Save to your Azure AD account, save to the USB flash, save to a file, या फिर print the recovery keys. ये अपने पास options हैं जिनकी help से हम अपने what we can say that keys को वो कर सकते हैं, save कर सकते हैं basically, right? So I wanted to save our keys and put over a Azure AD. अगर हम अभी Azure AD के पैनल पे जाएं, we are unable to find no BitLocker recovery key found on for this device. चलिए यहाँ पे हम सेव करते हैं पहला ऑप्शन. Next, next, and start encryption. Now our drive is encrypted successfully. 5.4.85 GB की जो ड्राइव है इसमें हमने सक्सेसफुली BitLocker कॉन्फ़िगर कर रखा है. Now do one thing. Back to the Azure portal and refresh the page. We are able to find one recovery keys. With the help of this particular recovery keys, आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के इस ड्राइव को कभी भी लॉग इन करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू फॉरगेट द पासवर्ड, जो आपने BitLocker के टाइम पे पासवर्ड लगाया था वो भूल गए हैं, तो उस केस में आपका जो ये कीज है BitLocker की Azure AD के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यू आर एबल टू लॉग इन इट. This is the actual usage of BitLocker key saving. And the same key will use as a password over there. As a password, yes. Okay, means the person we need to tell the person who is using that on-premises system. Correct, correct, correct. क्योंकि BitLocker पासवर्ड मोस्टली लोग भूल जाते हैं लगा करके. Okay. बिकॉज BitLocker पासवर्ड की उतनी ज्यादा नीड नहीं होती, डेली बेसिस पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती. एक बार BitLocker लगा दिया सिक्योरिटी के लिए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक कोई पासवर्ड ओपन ही नहीं करता. ठीक है. सो इन दिस केस क्या होता है कि हम यूज टू नहीं होते तो इस वजह से भूल जाते हैं. Okay. जो सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं BitLocker के, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लाइंट जो है ना हमारा BitLocker का पासवर्ड लगाकर भूल जाता है. तो इन दिस केस यू शुड नो अबाउट कि कैसे इस चीजों को मैनेज करना है. Okay. And BitLocker के और क्या क्या uses हैं? Just to protect the drive or
सिर्फ एनक्रिप्ट कर देगा उसको. To protect the drive, encrypt the data. No one can, अगर आपकी हार्ड डिस्क बाहर से भी कोई कैप्चर कर लेता है ना, तो no one can access your data. The main motto is to protect the data from means attacker या hacker के थ्रू जो एक्सेस होता है उसके थ्रू हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Okay, right. Clear? This is the concept of Azure AD join. Basically हमारा Azure AD join का concept हुआ. Any question, any doubt about Azure AD join? No, sir. Okay, one more question. AD join तो हमने कर लिया. Right. Now I want to use the Office 365 of the office. Okay. Company. I mean, how to use that user and how to use how I will log in that Office mail and mail server and the other services. How can the same when you log in your system, will be able to log in at that Office 365? No. For the mail For server? Office, no. Office 365 is a totally separate portal आप बोल सकते हैं. जैसे ये अपने पास portal.azure.com है, वैसे ही हमारा Office 365 का पोर्टल होता है. We must need to integrate our AD to Office 365 portal and purchase a separate license for Office services. Okay. ऑफिस की सर्विसेज के लिए आपको अलग से लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा. All right. ठीक है, उसके लाइसेंस F3 F1 लाइक दैट, ऐसे लाइसेंसेस रहते हैं जिनको हम परचेज करेंगे. Okay, I tried for that, but cost बहुत ज्यादा दिखा रहा था. तो मैं if I try to purchase, यू शुड प्रोसीड विद फ्री ट्रायल ना. yeah. एंड इन केस ऑफ फ्री ट्रायल नो नीड टू यूज क्रेडिट और डेबिट कार्ड. एक नहीं महीने के वो दिखा 1 मंथ का दिखा रहा था, वो ईयर का दिखा रहा था 14,000 समथिंग रुपीज. इतना ही फ्री का. यू कैन परचेज अ फ्री ट्रायल एवरी मंथ. आपको केवल जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा. For the testing purpose and for learning purpose, you can proceed and with free trial account now. Okay, I'll try after the class. Okay, F3 fine. license है, F3 license totally free है. Okay, that's fine. Done? Yeah, done. Okay, next important point is Sorry to related to interrupt the you. Sorry to interrupt you. I'm sorry. yeah, please. Manjit, one more thing. AD ज्वाइन कर लिया, तो AD ज्वाइन करने के बाद सर्विसेज क्या क्या यूज कर सकते हैं? AD join के केस में अगर हम इसमें थोड़ा सा और चीजों को इंक्रीज करें ना, तो BitLocker है to save to manage the password of our on-premises AD on-premises Windows 10. on-premises के Windows 10 के यूजर को Windows 10 की मशीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने Azure AD के अकाउंट से. And second important part, we are able to manage our Windows 10 to enroll over a Intune portal. एक Microsoft Intune portal होता है. उस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल को के ऊपर अपने इस डिवाइस को इनरोल करने के लिए भी Azure AD join का इस्तेमाल किया जाता है. Okay, right. 3 to 4 Okay. different options are available जब हम AD join को यूज करते हैं. All right. Clear? Yeah, clear. Next, can we proceed for AD Connect? Yeah. Okay, AD Connect का concept पहले समझ लेते हैं. Why it is important? Why we need to configure the AD Connect?
I hope you have idea about the Azure Active Directory. Yeah, Sorry, on-premises AD. AD, yeah. Okay. In the manager, you can, I mean, if you go to the, I mean, Windows Server 2000 domain through the manager, you can, I mean, make a user in the Active Directory. हम्म काफी पहले किया था, मतलब अराउंड 8 or 10 year back. उसके बाद टच नहीं किया. Okay, no problem. ठीक है. Let's try to understand about the actual use of Azure AD Connect, not join. Not join तो हमने डिस्कस किया. इसी तरीके से अपने पास दूसरा पॉइंट है Azure AD Connect का. I just read out कि डायरेक्ट अगर कोई माइग्रेट करना चाहता है ऑन प्रेमिसेस से, तो जो एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टली विल बी कनेक्टेड टू द Azure, I mean imported to the Azure Active Directory through the. Correct. करेक्ट. बट नॉट माइग्रेशन. इसको हम माइग्रेशन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. Yeah, माइग्रेशन एंड synchronization. सिंक्रोनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. करेक्ट. So we are trying to set up a synchronization part. Okay. So for example, this is our Azure portal and we have a on-premises setup. Setup in the sense I'm talking about the one domain controller that we established, maybe किसी भी name से class.com के नाम से हमने एक domain बना लिया on premises पे, and we have a n number of Windows 10 machine. These all are the Windows 10 operating system. You know that with the help of Active Directory services, we are able to connect and control on premises Windows 10. जो local में Windows 10 मशीनें हैं उनको हम आपस में कंट्रोल कर सकते हैं with the help of Azure AD services. For example, we created a multiple users like as maybe AWS is our user, GCP is our user, Azure is our user, for example, and we are able to log in our Windows 10 machine through the AWS, through the GCP, through the Azure. ये हम ऑन प्रोमाइसेस में मोस्टली करते हैं. दिस इज आवर एजेंडा. इज इट करेक्ट? जो भी ऑन प्रोमाइसेस से हम सेटअप बनाते हैं, जो भी ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन क्रिएट करते हैं ना, वो हम अपने इन विंडोज 10 को लॉगिन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. टेस्ट यूजर एंड वी आर एबल टू लॉग इन टेस्ट यूजर टू एक्सेस अवर क्लाइंट. एवरीथिंग इज ओके. सब कुछ यहाँ पे क्लियर चल रहा था. नाउ ऑफिस 365 कम इनटू द पिक्चर, या सर्विसेज आपकी पिक्चर में आ गई, एज़्योर एडी की सर्विसेज आ गई मींस, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ. एसएसओ का मतलब ये होता है कि ये जो यूजर है ना, AWS, GCP, Azure, इनका यूज कर रहे हैं अभी विंडोज 10 को लॉगिन करने के लिए, जो क्लाइंट मशीन है. एंड नाउ यू वांटेड टू यूज सेम यूजर टू लॉग इन योर मेलिंग सर्विसेज. आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू एक्सेस द मेलिंग सर्विसेज एज वेल. Okay. So what you need to do, this is our Azure portal, or Azure portal पे as we know that we have a Azure AD services. So we don't want to create the same user. यहाँ पे भी आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं एंड यू वांटेड टू क्रिएट अ सेम यूजर ओवर Azure AD, क्योंकि वही एम्प्लॉय हैं जिनको हमने वर्क स्टेशन ऑन प्रोमाइसेस पे प्रोवाइड कर रखा है. राइट. ये वर्क स्टेशन है अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, वर्क स्टेशन जिनको हम असाइन करते हैं वो सभी यूजर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड सेम यूजर को हम मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप यहाँ पे भी क्रिएट करो और Azure AD पे भी क्रिएट करो ऑफिस 365 की सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो दैट टाइम Azure AD Connect can help us. Azure AD Connect क्या करेगा, आपके जितने भी यूजर्स हैं ना, we are able to synchronize the users from on-premises to Azure portal. AWS, Azure, GCP, टेस्ट, इन सभी यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे. राइट.
बेनिफिट्स की बात करें, अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स लाइक एज ए यू कैन से दैट आप इनसे एसएसओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप इनको एडीएफएस कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ADFS stand for? Active Directory Federation Services to protect the login access. Okay. ठीक है, And SSO is एसएसओ single sign on, single sign on. single sign on. So single sign on, as per the name suggests, the meaning of single sign on कि आप एक ही यूजर का इस्तेमाल करके, एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके मल्टीपल एप्लीकेशंस पे लॉगिन करा सकते हैं। नो नीड टू प्रोवाइड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगेन एंड अगेन। हर एक के लिए आपको सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें इस पर रजिस्टर्ड एज ए यूजर रजिस्टर्ड होता है या सिस्टम रजिस्टर्ड होता है फॉर एसएसओ? यूजर यूजर यूजर। यूजर्स ओके फाइन। क्लियर? या क्लियर। So try to understand about the usage of Azure AD Connect synchronization, why it is important. So Azure AD Connect के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस पे, ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस पे आप AWS यूजर का इस्तेमाल करके विंडोज 10 लॉगिन करा रहे हैं एंड AWS also want to use our mailing services. Mailing services में not only the Outlook, you know that you are responsible to manage the teams. आप टीम्स को भी लॉग इन करेंगे और जो अदर सर्विसेज हैं लाइक एज अ शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, राइट, एंड स्काइप फॉर बिजनेस, ये सभी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ऑफिस 365 के जरिए। इज इट करेक्ट? और आप ये सभी सर्विसेज आप अपने विंडोज 10 पे यूज कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट, अगर एसएसओ नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको हर एक लॉगिन के लिए ना पासवर्ड देना पड़ेगा। स्काइप के लिए, वन ड्राइव के लिए, शेयर पॉइंट के लिए, आउटलुक टीम्स के लिए आपको हर जगह पासवर्ड देना पड़ेगा, विच इज यूज कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आप डेली बेसिस पे इन पे टास्क परफॉर्म करते हैं ना तो दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। सो टू सेव द टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो Azure AD Connect आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड Azure AD Connect क्या करेगा, आपके जितने भी यूजर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा सबसे पहला। और सिंक्रोनाइज करने के बाद हम इसी यूजर को ऑफिस 365 के सर्विस के साथ जोड़ देंगे। सेम यूजर विल यूज एंड प्रोवाइड द लाइसेंस ऑफ ऑफिस 365 एंड कॉन्फ़िगर एसएसओ। इससे बेनिफिट क्या होगा, एसएसओ जैसे ही आप ऐड करते हैं ना, आप इस AWS से लॉगिन करने के बाद इन सभी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड, क्योंकि आपने सेम पासवर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया है टू लॉग इन योर क्लाइंट कंप्यूटर। विंडोज 10 को लॉगिन करने के लिए आपने जो पासवर्ड यूज कर लिया है, अब उसके बाद आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? The meaning of SSO is basically related to use same user ID and password to log in multiple pages. जितने भी एप्लीकेशन आप असाइन करना चाहते हैं, जितने भी सर्विसेज आप असाइन करना चाहते हैं, वो सर्विसेज आप एक ही यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके जरिए हम अपने मीन्स एडी कनेक्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारी और सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द पासवर्ड हैश हम पढ़ेंगे। पासवर्ड राइट बैक एक सर्विस होती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज कस्टम
domain synchronization. Mhm. We are responsible to manage custom user synchronization. These all are the core feature, you can say that these all are the core features of Azure AD Connect. Okay. ठीक है, इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ Azure AD Connect के जरिए. And now the important part is the prerequisites. Azure AD Connect को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या prerequisites है वो हमें मालूम होना चाहिए. So let's try to understand about the prerequisite of Azure AD Connect services. Clear? Yes. So we should know about from both sides. We are responsible to manage on premises. Mhm. Class.com. This is our on premises AD. Mhm. And we have a Azure portal. तो दोनों की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, Azure AD की तरफ से और ऑन premises Windows 10 Windows Server AD की तरफ से. Azure portal की रिक्वायरमेंट just create AD user and make it global administrator. इसको हम ग्लोबल एडमिन के पॉलिसी असाइन कर देंगे, नॉट पॉलिसी, ग्लोबल एडमिन के राइट्स असाइन कर देंगे. Okay. दैट्स इट. ऑन प्रीमाइसेस से एज्यूर का तो ये काम, एज्यूर पोर्टल पे ये एक्टिविटी हो गई. ऑन प्रीमाइसेस की बात करें, ऑन प्रीमाइसेस पे क्या क्या चीजें चाहिए आपका. जो सिस्टम है should be a AD install. Configure डोमेन, यहाँ पे डोमेन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी जिसको बोलेंगे. Mhm. देन डाउनलोड Azure AD Connect tool. You can directly download from internet या Microsoft की साइट से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. Okay. And that's थर्ड need to इम्पोर्टेंट, download on your server, Microsoft server. करेक्ट. Right. मिनिमम 10 Mbps of इंटरनेट स्पीड. Okay. कम से कम 10 Mbps की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए. Mhm. इंस्टॉल Azure AD Connect tool. That's it. Mhm. इन टूल के जरिए हम इसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे and we will synchronize the all user to Azure AD. इन सभी यूजर्स को हम Azure AD के पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर लेंगे, Okay. जो भी ऑन प्रीमाइसेस पे क्रिएट किए. Is it okay? Yeah. So for this particular task, what we need to do, we need to establish Active Directory services. So AD install करने के लिए I have already installed Windows 10 operating system, Windows Server 2016 operating system in workstation. Mhm. Oh, you made a virtual machine? Virtual machine, VMware Sorry. workstation. Okay. Yes, yes. Sorry, I was saying VMware.
VMware Because workstation. It's mandatory to install VMware tool because you're unable to access the network without VMware tool. okay. Manjit, I forgot. I think you're getting late to drop your son. हाँ, yes. तो मेरे do को one याद thing, आ I'm just going to install active services. यहाँ पे हम AD install कर लेते हैं और कल से यहीं से resume करेंगे. ओके अगर नजदीक है तो आई कैन वेट फॉर सम टाइम. और अगर actually थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे. टाइम लग जाएगा. नहीं नहीं ये मत तो कल कर लेंगे Because कोई बात. अच्छा installation will बट 15 minutes. सॉरी. Installation में भी 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा. ओके मंजित कैन यू डू वन थिंग. Yeah. कोई मेरे को वो कोई लिंक भेज सकते हो 2016 सर्वर का सो आई कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन माय अनदर सिस्टम. मेरे पास एक लैपटॉप और रखा हुआ है. Yeah, sure. मैं 2016 का लिंक भेज देता हूँ आपको. या प्लीज. Yeah, thank you. कोई नहीं कल कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah, thank you. क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती थी. सॉरी. चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे. ओके नो प्रॉब्लम. Yeah, थैंक यू. ठीक है. Yeah. And send me the link please, don't forget.